बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई बीइंग वो इज स्टिमुलेटिंग एंड यूज़फुल टू। मतलब बोर होना जो वो स्टिमुलेटिंग क्यों है और एंड क्यों यूज़फुल है। सबसे पहले अपना हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं जहाँ पे आपको ABC नज़र है। इसका मतलब यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मौजूद है। दिस मोस्ट कॉमन ऑफ इमोशंस इज टर्निंग आउट टू बी मोर इंटरेस्टिंग देन वी थॉट। सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। We all know how it feels. It's impossible to keep your mind on anything. Time stretches out, and all the things you could be seem equally unlikely to make you feel better. But defining boredom so that it can be studied in the lab has proved difficult. It can include a lot of other mental states such as frustration, apathy, depression, indifference. There isn't even agreement over whether boredom is always a low energy, flat kind of emotion, whether feeling agitated and relentless, restless, countless, or boredom. In this book, Boredom: A Lively History, Peter Thoy at the University of Calgary, Canada. An emotion that motivates us to stay away from certain situations if disgust protects humans from infection. Boredom may protect them from infectious social situations, he suggests. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स। इससे ये होगा कि हम लोग अपने 20 मिनट जो है ना वो सेव कर लेंगे। हम अपना आंसर जो है मैक्सिमम 15 या 18 मिनट में अपना एक पैसेज सॉल्व कर लेंगे। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं ज़रा। ईस्टवुड, ईस्टवुड। हो सकता है कुछ कीवर्ड्स अंदर से रह जाएं लेकिन हम उनको दोबारा अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाए ज़रा आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हम लोग अभी इसको पढ़ के करेंगे तो हम लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ए को पढ़ लेते हैं। ए हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। ऑल वी नो हाउ इट फील्स, इट इम्पॉसिबल to keep your mind on anything. Time stretches on all the things you could do seem equally unlike to make you feel better. अब देखिए, an emotion that motivates us to have from certain situations if disgust protects human from experiencing boredom may protect them from infectious social situations. तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, problems with the scientific approach to boredom। तो हमारा आंसर क्या है, IV। नेक्स्ट पे जरा, by asking people about their experience of boredom, Thomas Gottes and his team By asking people about their experience of boredom, Thomas Gottes and his team at the University of Constance in Germany have recently identified 5 distinct types: calibrating, searching, reactant, and apathic. These can be यहाँ पे identified 5 distinct types हैं। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, creating a system of classification of feelings। Classification क्या है, दर्जा बंदी। तो हमारा आंसर वहाँ पे क्या है, IV। Next page. Psychological Sandyman at the University of Central Leicester, UK goes further. All emotions are there for a reason, including boredom. She says, Man has found that being bored makes us more creative. We are all afraid of being bored, but in actual fact, it can lead to all kinds of amazing things. बोरिंग जो है ना, हम उससे कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, द प्रोडक्टिव आउटकम दैट मे रिजल्ट फ्रॉम अ बोर्डम। तो आंसर क्या है हमारा, आई। नेक्स्ट पे है ज़रा, साइकोलॉजिस्ट जॉन ईस्टवुड at University in Toronto, Canada, isn't convinced if you are in a state of mind wondering you are not bored. He says, in my view, my definition, boredom is an undesirable state. That doesn't necessarily mean that it is adaptive. He adds, pain is adaptive. If we don't have physical pain, bad things would happen to us. Does that mean that we should actively cause pain? No, but even if boredom has evolved to help us survive, it can still be toxic. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है कि बोर्डम से हम लोग कुछ ना कुछ रिकवर करते हैं। तो
Psychologist John Eastwood at York University in Toronto, Canada, isn't convinced if you are in a state of mind wandering, you are not bored. He says, I am a view. By definition, boredom is undesirable. That doesn't necessarily mean isn't adaptive. तो हमारा आंसर क्या है? We a potential danger arising from boredom. Eastwood's team is now trying to explore why the attention system fails. It's early days, but they think that at least some of it comes down to personality. Boredom proneness has been linked with a variety of traits. People who are motivated by pleasure seem to suffer particularly badly. Other personalities, such as curiosity, as with a high boredom threshold. तो हमारा आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे? किस चीज़ से बंदा बोर होता है? आइडेंटिफिकेशन हो रही है, तो हमारा आंसर क्या है? बी ट्रिपल आई. नेक्स्ट पैराग्राफ. ट्राइंग टू एक्सप्लोर. Psychologist Francis Wester speculates that over-connected lifestyle might even be a new source of boredom. Speculates that over-connected lifestyles. In modern humans, so there is a lot of overstimulation, but still a lot of problems finding meaning issues. Instead of seeking yet more mental stimulation, perhaps we should leave our phones alone and use boredom to motivate us to engage with word in. हम लोग क्या करते हैं? आप फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हमारी नहीं है, तो इस वजह से भी हम लोग बोर होते हैं. तो हमारा आंसर क्या है? अ न्यू एक्सप्लेनेशन एंड अ न्यू क्योर फॉर बोर्डम. हम लोग अपने फ़ोन को छोड़ दें और आपस में एक दूसरे से बातचीत किया करें. तो ये था हमारा लिस्ट ऑफ एंडिंग्स. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, 23. राइट द करेक्ट लेटर ए टू ई यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा करेक्ट लेटर. पीटर थ्वे, थॉमस गोटस, जॉन ईस्टवुड एंड फ्रांसिस. पीटर थ्वे क्या है? पीटर थ्वे ये किधर है? ये थॉमस गोटस है. ये क्या कहते हैं? हम इसको देख लेते हैं पहले. पीटर थ्वे ये. And I compares it to gust, an emotion that motivates us to stay away from certain situations. If disgust protects humans from injection, boredom may protect them from social situations. ये कौन है? पीटर थ्वे. ये पीटर थ्वे है. तो हम देख लेते हैं. Trying to cope with boredom can increase its negative effects. Levels of boredom may fall in the future. One sort of boredom is worse than all others. पीटर थ्वे यहाँ पे कहता है an emotion that motivates us to stay away from certain situation. तो हमारा आंसर क्या है? बोर्डम में इनकरेज अस टू अवॉइड एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. आंसर क्या है हमारा? ई. इसके साथ हम लोग ऐसे लिख देंगे. थॉमस गोटस ये क्या कहता है? किधर है थॉमस गोटस? ये बाय आस्किंग पीपल अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ बोर्डम हैज हिज टीम. यहाँ पे उसने क्या किया? आइडेंटिफाइड 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स. Different calibrating, searching, reactant, and apathic. These can be plotted two axes, one running left to right, which and the top bottom, which means how positive or negative the feeling is. Gottes has found that while people experience all kinds of boredom, they tend to specialize in one. एक में वो स्पेशल है. वन ऑफ द फाइव टाइप्स द मोस्ट डैमेजिंग इज रिएक्टेंट. एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है. तो वन सॉर्ट ऑफ बोर्डम इज वर्स देन ऑल अदर्स. ये किसने कहा है? थॉमस गोटस ने. हमारा आंसर क्या है? बी. जॉन ईस्टवुड किधर है? ये आ गया जॉन ईस्टवुड. तो यहाँ पे उसने ये कहा है कि जो बोर्डम है ना हमारा क्योर करता है. तो हम लोग देख लेते हैं कि बोर्डम से हमारे यहाँ पे भी हमने पहले इसका आंसर दिया है. इसका डी का इसका आंसर हमने दिया वी. अ पोटेंशियल लीजर अराइजिंग फ्रॉम बोर्डम. तो हम यहाँ से भी इसका आंसर दे सकते हैं इसको पढ़े बगैर. इसका आंसर डी हो सकता है. ट्राइंग टू कॉप विद बोर्डम कैन इंक्रीज इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स. हमारा आंसर क्या है? डी. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा फ्रांकोस वेबस्टर. ये आ गया लास्ट पे. ये क्या कहता है? हम लोग दुनिया को छोड़ दें, मोबाइल को छोड़ दें और दुनिया के साथ कनेक्टेड हो जाएं, तो हमारा जो है मसले हल हो जाएंगे.
ए, जैसे हम आजकल रहते हैं वो हमारी बोर्डम को इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ज़्यादातर जो आंसर दिए हैं वो पहले हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर ली, तो हम लोगों ने ऑटोमेटिक आंसर दे दिए। जब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कर लेते हैं तो हमारे ज़हन में सारे आंसर्स बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वन वर्ड, एक लफ्ज़ लिखना है, एक से ज़्यादा नहीं लिखना है। रिस्पॉन्सेज टू बोर्डम फॉर जॉन ईस्टवुड, द सेंट्रल फीचर ऑफ बोर्डम इज़ दैट पीपल कैन नॉट डैश ड्यू टू अ फेलियर इन व्हाट ही कॉल्ड द अटेंशन सिस्टम। फॉर जॉन ईस्टवुड, ये किधर why the attention system fails. It's early days, but they think that at least some of it comes down to personality. Boredom proneness has linked with a variety of traits. People who are motivated by John Eastwood. Yeah. The central feature of boredom is a failure to put our attention into gear. The cause has inability to focus on anything. People cannot inability to focus on people cannot focus anything due to failure in what calls the attention due to failure in what calls the attention system is a failure to put our attention system. अब देख रहे हैं यहाँ पे सिनोनिम हर चीज़ हमें मिल रही है। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। And as a result they become frustrated and irritable. His team suggests that those for whom dash is an important aim in life may have problems in coping with boredom. His team suggests that those for whom dash is an important aim dash for whom dash is an important. Eastwood team is not trying to cope with the attention system. It's early days, but they think that at least some of it comes to personality. Boredom proneness has linked with a variety of traits. People who are motivated by pleasure seem to suffer particularly badly. People who are motivated by pleasure. तो हमारा आंसर क्या है? Pleasure is an important aim in life. May have problems coping with boredom, whereas those who have the characteristics of dash can generally cope with it. Characteristics of dash किसके अंदर कौन से traits हो? Such as curiosity. आंसर क्या है हमारा? ट्रेड्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स। क्यूरियोसिटी। आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा सिनोनिम पे ध्यान रखना है। ये था हमारा आज का सेकंड पैसेज बुक 13 का। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपके जहन में किसी किस्म के और भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना थर्ड पैसेज करेंगे। पैसेज 3 आर्टिफिशियल आर्टिस्ट्स, ये हम नेक्स्ट में करते हैं।